ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੰਡੀ ਰੋੜਾਵਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇਚਰ ਬਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਮਾਡਲਾਂ, ਚਾਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇਚਰ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਰਨ ਸਹਿਗਲ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਡਲ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਸਹਿਗਲ, ਡਿੰਪਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਸਮਾਈਲ ਪਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਡਲ, ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕ ਲਵਕੁਸ਼, ਮੈਥ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੁਨੇਜਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਈਲ ਪਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਜਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। Good morning. We are super excited to welcome you all to our Science, English and Maths fair. Today you will get to see some amazing models and projects created by our talented students. This is the hard work of our talented students and teachers, and we are proud of their efforts. We want to say thanks to all the parents, teachers who supports them, and we also want to thanks to JR News for visiting our school. Thank you. जी मैडम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे स्कूल में साइंस फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म किया है। बच्चे बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बना के लेके आए हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। एक्चुअली मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी है वो ये है कि बच्चे मार्क्स के लिए कुछ भी बना के ले आते हैं, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट बना के लेके आए हैं इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने जेन्युइनली कुछ सीखा है और जो चीज़ें वो बता रहे हैं, जो चीज़ें वो बना के लेके आए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने बड़े अच्छे से दी है। बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है और जो क्लास टीचर हैं उनको भी अपने बच्चों पे बहुत प्राइड फील हो रहा है और मुझे भी मेरे स्कूल के बच्चों पे बहुत ही प्राइड फील हो रहा है कि उन्होंने इतने कम टाइम में और बड़ा अच्छा जो परफॉर्म किया है और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि जो साइंस है उसके पास हर एक चीज़ का आंसर होता है, बस हमें हमारे जो प्रयास हैं, हमारी जो कोशिशें हैं वो सही दिशा में होनी चाहिए। अगर हमारी कोशिशें सही दिशा में होंगी, हम प्रयास अच्छी तरह से करेंगे तो हम ज़रूर सफल हो सकते हैं। तो ये हमारे बच्चों ने एक एग्ज़ाम्पल सेट की है। जो इनके प्रोजेक्ट हैं, जो इनके मॉडल हैं, ये सिर्फ प्रोजेक्ट और मॉडल नहीं है, इन्होंने दिखाया है कि ये हमारी बच्चों की नई खोज, उनकी नई सोच, उनकी एक क्यूरियोसिटी का एग्जाम्पल है कि जो बच्चे सोचते हैं, जो बच्चों के माइंड में चल रहा है, वो चीज़ें उन्होंने ली हैं और वो चीज़ें वो बच्चे बना के लेके आए हैं, जो कि वाकई में प्रशंसनीय है, प्रेजेबल है। जो उन्होंने बनाया है बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और लास्ट में मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने टीचर्स को। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई टीचर्स। Good morning everyone. Today we are here to show you all how water is filtered. So firstly, we have to take some water and have to pour it inside the sand. Sand will filter out all the impurities like dust and dirt from the water, and then it will be passed through the white stones. White stones will filter out all the big impurities from the water, and then it will be passed through the black stones. Black stones will filter out all the small impurities from the water, and then it will be passed through the cotton. Cotton absorb everything from the water. Now you get filtered and clear water. Thank you. Good morning everyone. My name is Ekamjot from SDM Public High School. I am represent to the model. This project is totally based on the principal absorption. The smoke coming from the industry and the house of chimney contain very large amount of the particles.
This is very harmful for our health and as our environment. To explain the model of carbon purification, the smoke during his process of manufacturing, this is not up in the chimney pipes. Carbon absorber can. This is our working model about street light and windmill. First of all, what is windmill? A windmill is a machine that converts kinetic energy into mechanical energy. Which can use to do tasks like pumping water, generating electricity. In and windmill mean how to produce electricity by air. In this project, we have explained the concept of 3D shapes, especially faces, edges, and vertices. We have shown how 3D solids like cube, cuboid, cone, and sphere have different number of edges, faces, and vertices. Through this project, we are shown how 3D solids are structured in real life. Now, I am going to show some 3D shapes. This is a cube. It has 6 faces, 12 edges, and 8 vertices. This is a sphere. It has 1 face, no edges, and no vertices. This is a hexagonal prism. It has 8 faces, 18 edges. In this project, we have mentioned each diagram of circles from geometry. Although it is a theory-based concept, so we have clearly mentioned each theorem along with its statement and simple diagram so as to make the concept easier to understand. These theorems are very much helpful for solving questions related to cones, arcs, angles, and cyclic particles. Now, this is Supanjit Kaur. In this project, I have written square and cube of numbers from 1 to 20. This helps in quick mental calculation and makes many maths topics easier like algebra, number system, and exponents. In this rotating box model, there is a long paper roll. My name is Samarjit Singh. This is science project air conditioner. In this project, we can use cardboard and 2 DC motors. We have used 3 watt and 4 watt DC motors. 3 watt motor is fitted in indoor and 4 watt motor fitted in compressor. We can use adapter to convert current AC to DC. Let's see how it is work. Thanks. This is our science project air cooler. In this project, we use switch, fan, motor, water pump, pipe. Let's see how it is working. It is a fan and water pump. This is a mini DA projector of RC tractor not gear. Let's see how it is working. Thank you. Good morning, everyone. We are from SDM Public High School. Today I will present the process of photosynthesis. See, these are green leaves. They make their own food using water and soil in the presence of sunlight. And when green leaves make their own food and when it's ready, is kept form of glucose, which is a kind of sugar. In this process, green leaves release oxygen and inhalate carbon dioxide. This process is carbon dioxide. Thank you. My name is Maninder. I read in SDM Public High School in 10th class. This is our model, science model, microscope. It is working model. It is 2 types, molecular and biocular. It is used to see microorganisms larger. It cannot see organism with naked eyes. Thanks. Good morning, all of you. My name is Arshdeep Singh and I study in class 7th in the school of SDM Public High School. Today is my project of vending machine. Vending machine is a type of machine of technology of new technology was introduced in a new generation, and this will work on if we coin here. So this is a card of ATM. If we so that this will take. Today I will represent the model of action verb. So firstly I represent the definition of action verb. Action verb describe a physical or mental action performed by subject is called
action verb. Example is run, etc. So first is run. They run on the road. Next is laugh. They laugh to see the monkey. Next is write. SDM Memorial Public High School. We are here to explain the model of noun. Firstly, I'll explain the definition of noun. The name of any person, place or thing is called noun. Types of noun. First, common noun. Common noun is a name of common to every person called common noun. We have some example of common noun like apple, tap, ball and butterfly. Next, proper noun. Proper noun is the name of some particular place called proper noun. We have some example of proper. Right. Opposite words are words that have opposite meanings. For example, tall, short, hot, cold. Good, bad. Big, small. Slow, fast. Hot, cold. Up, down. And I am excited to share with you my model on the topic of parts of speech. Part of speech refer to the classification of words based on their function in a sentence. 8 main parts of speech. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. Now we have a noun. A noun is the name of a person, place or thing. Example, Fazilka, smile, etc. Now we have a pronoun, a word that take a place of noun. Example, she, he, its, etc. Now we have adjective. A word that modifies or describes a noun or pronoun. Example, happy, big, etc.